अच्छा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, यानी कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इस टॉपिक का जो सेकंड हाफ है वो है द लंग्स। फर्स्ट हाफ था एयर पैसेजवे, ठीक है, और दूसरा है द लंग्स। क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एयर पैसेजवे और एक होते हैं लंग्स, ठीक है। एयर पैसेजवे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, अब हम लंग्स करने जा रहे हैं। तो लंग्स के जो यूनिट्स होते हैं, lungs itself they are composed of alveoli, ठीक है। both lungs are composed of alveoli on each side, so there are a pair of lungs in thoracic cavity, ठीक है, and the lungs are outside protected by ribs. So there are 12 pair of ribs that are present in chest wall. So these 12 pair of ribs are connected with each other with the help of intercostal muscles. So rib muscles are joining each rib with each other. So in this way the ribs are helping you in contraction and relaxation of your lungs. When your lungs are inhaling air, they get filled with air. So ribs muscle have to relax in order to give internal thoracic cavity some space. So the rib muscles that are intercostal muscle, they are joining ribs together, and there are 12 pair of ribs. A thick muscular structure that is called diaphragm, that is also present below the lungs. This diaphragm, which is actually separating the thoracic cavity from abdominal cavity. In thoracic cavity there is heart, in thoracic cavity there are lungs, in thoracic cavity there are ribs, and there are rib muscle mean intercostal muscle, while in your abdominal cavity there is liver, in abdominal cavity your digestive system is there, and in abdominal cavities pancreas are there, and in abdominal cavities kidneys are found. So in thoracic cavity lungs are found. So as far as the size of lungs and blood vessels are concerned, so left lung is slightly smaller and it has two lobes, ठीक है। लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है और इसके दो लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग जो होते हैं, द राइट लंग इज बिगर देन द लेफ्ट वन एंड इट इज हैविंग 3 लोब्स। जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। इसमें आप ये बात देख लें कि ऑन द लेफ्ट साइड योर हार्ट इज प्रेजेंट, दैट्स वाई टू ऑक्यूपाई द स्पेस एंड टू गिव इट सम स्पेस द राइट लंग इज हैविंग 3 lobes, while the left one where the heart is also found, it is having 2 lobes and it is slightly smaller. Both lungs are spongy and elastic organs. Spongy and elastic organs because in order to trap air inside and in order to take air inside, in order to release air, they have to be spongy and elastic. So as far as the blood vessels in lungs are concerned, we have discussed it before that the lungs have blood vessels that are actually the branches of pulmonary arteries and pulmonary veins. So each lung is enclosed by 2 membranes. The membranes are called pleural membrane. So there are 2 membranes, that's why they are called outer pleural membrane and inner pleural membrane. एक लंग को सराउंड किया हुआ होता है 2 मेम्ब्रेन ने, एक को कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये फ्लूइड बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, क्योंकि वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ताकि फ्रिक्शन वाला एलिमेंट ना हो, ठीक है, और ताकि वो फ्रीली एक्सपैंड कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें लंग्स वाइल इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ एयर. So this is about the lungs, its location, its size and the blood vessels.